बंद करो। CBRC facility comes under the small category zoo as per the Central Zoo Authority. This facility is particularly for Asiatic black bear rehabilitation in Northeast India. Once they are in our care, we always look for better care. Some individuals came to us very poor in their health condition, and some are apparently look healthy. Beyond that, we also screen their health to make them sure for any disease free like zoonotic and other infectious disease before shifting to the release site. मेरा नाम है एंटोनी गुरंग, हम अरुणाचल से है। अभी हम करते हैं WTI में लगभग अभी 4.5 साल हो गया क्या, अभी 5 साल होने जा रहा है। हम लोग 8 बजे के बाद ऑफिस जाता है। हम लोग 8 बजे से ऑफिस जाने के बाद लड़का लोग को दिखता है कौन आया कौन नहीं आया। ऑफिस में काम करने के बाद 12 बजे के बाद जाता है दाना देने के लिए। तो दाना देने से पहले हम लोग चेक करते हैं हर चीज़ को, कौन सही है कैसे है ना बालू, कोई घायल है ना कीड़ा शीरा लगता है तो वो सबको चेक कर लेगा। चेक करने के बाद लास्ट में हम लोग दाना दे देते हैं। दाना दे के पूरा बैठता है, हम लोग वहाँ बहुत देर तक बैठने का डिस्कस करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, सेंटर में सफ़ा करना है नहीं करना है। तो देखिएगा कंपाउंड देखिए ठीक नहीं होने से सब मिल के हम लोग सफ़ा करेगा। सफ़ा करके फिर हम लोग ऑफिस आएगा। मैंने हमेशा क्लीन करके रखना है इस चीज़ को, हर चीज़ को बालू का को ज़्यादा गंदा संदा होने से भी ठीक नहीं है, बीमार होगा बालू लोग। इसलिए हम लोग लेटिंग सेटिंग भी होने नहीं देता ज़्यादा। मौसम कभी ख़राब होने से छोड़ देता है, उसमें जब मौसम ठीक होने से कर लेते हैं। Hi, myself Dr. Subhashis. I work here in Center for Bear Rehab and Conservation Wildlife Trust of India. At CBRC, we aim for conservation and welfare of orphaned black bears through rehabilitation. Further, through outreach and social science methods, we are trying to address the displacement of the cubs that are happening in Northeast. And for balancing the rehab and conservation, we have divided our responsibilities into 3 wings. Animal health looked by our veterinarian and keeper, rehab ecology of bears by ecologist and the rehab team, and outreach part and even the community participation looked after by our sociologist. The contribution of local community is very much positive and very high, particularly for this Asiatic black bear species conservation in park landscape. Next to the forest department, they are the main pillar for this CBRC facility.
The CBRC was established with the objective of rescuing and rehabilitating of orphaned black bear cubs. So sometimes what happens is black bear cubs are often found in the forest or are left behind by their mothers in the forest. So we rescue them, we nourish them, and we then rehabilitate them, and finally we release them into the wild. So what department do is department helps them in infrastructure, in manpower, and provides overall legal oversight. Forest department, they have allowed us to put back such a big omnivorous species, Asiatic black bear, in their landscape. That's a great contribution and cooperation, and I salute them. And I hope in future they'll continue it. हम लोग अभी बेगोइंग जा रहे हैं वहाँ पे फॉलो का शिफ्टिंग कराने के लिए। CBRC runs day to day through individual fundings, and every contribution it goes directly to the Asiatic black bear conservation. We are getting support from International Fund for Animal Welfare, IFAW. We also getting support from CSR funds, and that is always grateful to us. एनिमल को लेके आता है यहाँ पे ना, लेके आके यहाँ पे रखता है, उसके बाद जंगल वो कराता है। वो कराने के बाद उसको सिखाता है कि ताकि मतलब कल को उन लोगों को रिलीज़ करना है तो उन लोगों को सिखाता है, वो जंगल घुमाता है, क्या खाता है, मतलब उन लोग को मतलब घुमाता है, उन लोग को ढूंढ के खा लेता है। उन लोग जो मतलब जो उन लोग को शायद जो स्मेल में उन लोग को अच्छा मिलेगा ना, तो उसको उन लोग खाता है। There are protocols for less human imprinting that are followed by our rehab team. For example, we do not allow the cubs to get too much attracted by not interacting with them directly while providing food, and we also show no affection to them during the rehab process. हम लोग यहाँ पर ऐसे है कि दो आदमी करके शिफ्ट करता है, फिर आफ्टर 10 डेज़ का बाद में फिर हम लोग का फिर 2 कीपर आता है, तो हम लोग ऐसे करके 4 आदमी यहाँ पर रोटेशन करते हैं। Today we are going to sedate our bear cubs. After sedation we will be putting radio collar, and now we have prepared anesthesia before collaring, and we will be tranquilizing the animals, and once they come down we'll put the radio collar.
track the success of the released bears in the wild, we collar the cubs for about 6 months' time and track their ranging and resource use. CBRC always stands to conserve Asiatic black bear in northeast India. However, we are thinking to extend it for the endangered and critically endangered wildlife species conservation center in future.